Hi guys and welcome to an all new video. मेरा नाम है तानिया खनीजो and I run two YouTube channels. One is called Living with Tanya, which you are currently visiting, and another is a travel channel called Tanya Khanijo, which is after my name. So this was just my introduction because I know ये video पे शायद बहुत सारे नए लोग आएंगे क्योंकि this video is primarily about how can you go about renting a place in Gurgaon. And the reason why I'm making this video is because I am based in Gurgaon. In fact, I have rented a place over here. And मैंने एक और ऐसी video बनाई थी which is called The Cost of Living in Gurgaon. And because that video is getting a lot of hits lately, I realized that a lot of you must be looking to move to Gurgaon. So this is going to be a purely informational video and इस पूरी intro में ही मैंने इतनी बार गुड़गांव बोल दिया है. So without any further ado, let's just get started with the video. So पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या-क्या mention करने वाली हूँ so that you can just navigate to that timestamp and look for that particular information only. So I'm going to be covering the good areas that you can be looking at, what should be your criteria of selection of a particular society or an area. The third thing is the average cost of rent, security and brokerage. What are the popular portals that you can be looking at for renting a place, and some general tips and tricks for getting the best deal for your location and the apartment. Also this time I'm just going to refer to my phone for notes, इसलिए please don't mind if I keep looking down every once in a while. सबसे पहले आते हैं हम लोग popular locations पे. So these are just some popular locations that I'm mentioning from the information that I have. But of course you should be also looking at other criteria जैसे कि proximity of metro stations or whether or not you're going for a gated society or not. So Gurgaon में usually when you go through listings आपको दो टाइप की listings मिलेंगी. एक होगा builder floors and second is going to be residential complexes and societies. Personally, I would recommend that you should go for a residential society so that you have amenities like MyGate security or you know some other sports facilities or just generally everything that comes with a society क्योंकि वो बस safer होगा और थोड़ा सा और ज़्यादा organized होगा. But builder floors are also an option and they are just generally cheaper on the rent side, which is why some people also find that an attractive option. Areas की बात जहाँ तक करें तो some of the areas are DLF Phase 5, Golf Course Road, Sushant Lok 1, DLF Phase 1, DLF Phase 4 and these areas are generally also connected by metro stations and have some really good societies on offer. इसलिए आप ये areas में जब listings check करेंगे तो आपको अच्छी societies मिल सकती हैं. But if you don't mind being a little further away from metro stations or being in an area which is less connected, अगर आपके offices वहाँ के पास हैं तो फिर ओल्ड गुड़गांव एंड सोना के साइड में भी आप लिस्टिंग्स ढूंढ सकते हैं. वहां के भी कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं. अब आती है बात रेंट की. ठीक है, सो रेंट यूजुअली विल आल्सो डिपेंड ऑन वेदर यू गोइंग फॉर एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और यूर प्रेफरिंग अ पीजी. आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं या फिर यू वांट टू शेयर एन अपार्टमेंट विद समबडी. यूजुअली पीपल प्रेफर शेयर्ड अपार्टमेंट्स क्योंकि जितना भी फ्लैट का रेंट होगा दैट विल जस्ट गेट स्प्लिट इनटू 3 if it's a 3 BHK or 2 if it's a 2 BHK and that way you also get to split the expenses and groceries वगैरह वगैरह वगैरह. बट अगर आपको शेयर्ड अपार्टमेंट में नहीं रहना तो आप पीजी में भी रह सकते हैं. इन दोनों की रेंट में और एमिनिटीज में थोड़ा सा फर्क होगा. शेयर्ड अपार्टमेंट्स के जो एवरेज रेंट कॉस्ट होते हैं विल वेरी फ्रॉम अराउंड 11K to 18K मतलब पर मंथ एंड यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर एन अमाउंट दैट सूट्स यू. जैसे कि अगर आपको 11,000 का कोई रूम रेंट पे करना है तो आप उसी के हिसाब से लिस्टिंग्स चेक करें जस्ट टू सेव ऑन दैट एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट ऑफ रेंट. बिसाइड्स दैट अगर आप पीजी के लिए ऑप्ट करेंगे तो उसका भी कॉस्ट कुछ ऐसा ही होता है. 11,000 से लेके 18,000 तक जा सकता है. और ये जो मैं रेंट मेंशन कर रही हूँ दिस इज फॉर अ प्राइवेट रूम इन अ पीजी. अगर आप शेयर्ड पीजी लेंगे या फिर जिसका मतलब है कि डबल सीटर एक ही रूम में 2 बेड्स हो और आप किसी के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो गेट अ डील विच इज अंडर 10K बिकॉज जो पीजी का कॉस्ट है दैट ऑल्सो गेट स्प्लिट इनटू 2. इसमें खाने का कॉस्ट, वाईफाई का कॉस्ट और बाकी जो एमिनिटीज होती है पीजी की वो भी इंक्लूडेड होती है. सो दिस इज ऑल्सो लुक्रेटिव ऑप्शन स्पेशली इफ यू डोंट वांट टू पे फॉर योर हाउस हेल्प और फूड और ग्रोसरीज एडिशनली ओवर एंड अबव योर हाउस रेंट. एंड जहां तक हाउस रेंट की बात शुरू ही हुई है तो मैं ये भी बता दूं कि जब आप हाउस पहली बार रेंट करेंगे इफ यू गो थ्रू अ ब्रोकर यू विल आल्सो हैव टू पे अ ब्रोकरेज फी एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ योर फर्स्ट मंथ्स रेंट. अगर मान के चले कि 11,000 का रेंट है तो अराउंड 5,500 आपका ब्रोकरेज बनेगा जो आपको ब्रोकर को पे करना होगा फॉर हेल्पिंग यू फाइंड दिस हाउस. एंड सिक्योरिटी चार्ज इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट दैट यूल हैव टू पे फॉर द फर्स्ट टाइम. सो 11,000 के रेंट पे अगेन द सिक्योरिटी इज गोइंग टू कम डाउन टू 22,000 बिकॉज इट इज यूजुअली twice of first month's rent. So that's a very expensive component. तो अगर आप एक 11,000 का रूम रेंट करने वाले हैं किसी अपार्टमेंट के अंदर तो आपको फर्स्ट मंथ में पे करना पड़ेगा 11,000 रेंट प्लस 55 ब्रोकरेज प्लस 22,000 सिक्योरिटी एंड द टोटल ऑफ दैट कम्स डाउन टू 38,500 विच इज क्वाइट एक्सॉर्बिटेंट. तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे मूव करने से पहले स्पेशली फर्स्ट मंथ के लिए ऐसे ही करनी चाहिए कि आप उतना अमाउंट लेके चले सिक्योरिटी प्लस ब्रोकरेज प्लस योर हाउस रेंट. बट इस पॉइंट के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक मनी सेविंग टिप है. अगर
अगर आप ब्रोकर या ब्रोकरेज को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आप वो 5500 का कंपोनेंट सेव करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर फेसबुक ग्रुप्स लाइक फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव, जहां पे कई कबार आपकी डायरेक्टली ओनर से भी बात हो सकती है। एंड अगर आप ब्रोकर को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, देन यू वोंट हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा ब्रोकरेज। एंड देयर इज अनदर वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड nobroker.com। उसमें भी यूजुअली जितनी भी लिस्टिंग्स होती हैं, दे आर ऑल डायरेक्टली बाय ओनर्स, एंड दैट वे आल्सो यू कैन अवॉइड ब्रोकरेज, बिकॉज आई फील लाइक समटाइम्स इट्स अ वेरी अननेसेसरी कंपोनेंट, क्योंकि आप घर ऑनलाइन डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं। सो अब जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि आप फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव के थ्रू अपने लिए कोई फ्लैट ढूंढ सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ऑल यू हैव टू डू इज register yourself on that group. By register I mean just join that group. It's a private group, so it'll take some time for you to get accepted. And once you're on the group, you just have to mention your preferred location, your budget, and also ask for leads. Within the same group, you can also search for keywords like location, societies, house rent, and look at listings that are already available. Similarly, even on nobroker.com, all you have to do is look for listings based on your preference of location, and you can add various filters जैसे कि कितना rent आपको चाहिए and कौन सी location चाहिए, and you will be able to find a listing according to your preference. One very important tip at this point is कि sometimes through these groups or these websites, not only will you get to talk to owners directly, but कभी कभार आपकी flatmates से भी बात हो सकती है, मतलब in a pre-lived accommodation, if somebody is vacating, you get to be a replacement to that person. तो ऐसे situation में, या फिर even if you're talking directly to the owner, always keep all communication on email, especially if it's about paying rent or if it's about paying security money. अगर सब चीजों का आप या तो एक ईमेल कम्युनिकेशन या फिर कोई रिटन कम्युनिकेशन रखेंगे तो इट्स बेटर, बिकॉज दैट वे यू जस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और एनी काइंड ऑफ फिशिंग और एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। तो जब भी आपकी किसी से बात हो तो आप नेगोशिएट कभी करना भूले नहीं, स्पेशली ऑन द कॉस्ट ऑफ रेंट। एटलीस्ट 5000 तो हमेशा नेगोशिएट करने की कोशिश करें ही, बिकॉज इफ यू आर स्पेशली मूविंग टू एन अपार्टमेंट जिसमें फर्नीचर नहीं है, जो फर्निश नहीं है, सेमी फर्निश्ड है, तो आप ये पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको एडिशनल फर्नीचर रेंट करना पड़ेगा और उसका भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ऑलवेज ट्राई एंड नेगोशिएट अ लिटिल बिट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेंट, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग टू द ओनर डायरेक्टली। अगर ब्रोकर से बात कर रहे हैं तो भी कॉस्ट ऑफ रेंट पे हमेशा नेगोशिएट करने की कोशिश करें। 5000 तो least minimum, you can there's always scope for you to negotiate. But more often than not, try and look for an apartment which is already furnished or at least has basic amenities जैसे कि AC, geyser, pipeline, या फिर pipeline नहीं भी है तो cylinders already available होने चाहिए। तो आप जब भी किसी house visit पे जाएं, just look around and see what basic amenities are already present, because that will just in future save added cost to you, जैसे कि आपको AC rent नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको furniture rent नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका फ्लैट ऑलरेडी फर्निश्ड है एंड यू लाइक द वाइब ऑफ द फर्निशिंग, देन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ फर्निश्ड अपार्टमेंट। अगर सेमी फर्निश्ड मिल रहा है जिसमें एसीज एंड चीजें कुछ कुछ प्री फिटेड हैं, देन डेफिनेटली दैट्स आल्सो अ ग्रेट डील, बिकॉज यू कैन एडिशनली रेंट फॉर फर्नीचर ऑफ योर चॉइस। सम ऑफ द नाइसर रेंटल ऑप्शंस इन गुड़गांव आर Furlenco and Rentomojo. These are some websites that I've also used personally for furnishing my own house. उनकी सर्विसेज काफी hassle free हैं. You can also additionally rent appliances like TV, fridge, microwave, water purifier and everything over here. That is the best part about living in Gurgaon that I feel is very convenient. Next thing that you should keep in mind on a house visit is कि आप ये चेक कर ले कि कुछ भी टूटा हुआ ना हो, लाइट्स सारी चल रही हो, जितने भी सॉकेट्स हैं, प्लग पॉइंट्स हैं, they are all operational, and if anything is broken you can point it out to the owner of the house at that point only, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उस फ्लैट को वेकेट करें and if something is broken you may have to pay security charge for it or your security money may get cut, which is something that is not even your fault. And in any case, owners are supposed to give their house on rent in a condition which is good and suitable for you to live in. तो अगर कोई लाइट नहीं चल रही है, सॉकेट नहीं चल रहा है, कोई डोर ब्रोकन है, वॉल खराब है, तो आप ये उन्हें at the start of even making your rent agreement or finalizing the house ये confirm कर सकते हैं उनके साथ. And needless to say, also please check the bathroom and check if the flush is working and make sure that the house is whitewashed before you move in. और हाँ, और कोई unpaid bills ना रह गए हों, जैसे कि electricity bills, gas bills, कोई भी पाइपलाइन के बिल्स, कोई भी ऐसे अनपेड बिल्स जो आपके ऊपर ना आ जाए इन द नेक्स्ट मंथ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्पेशली इफ यू वुमेन एंड इवन जनरली इफ यू प्रेफर सिक्योरिटी, तो आप जिस भी सोसाइटी में मूव इन करें, चेक इफ दे हैव माईगेट एक्सेस ऑन इट, बिकॉज माईगेट इज आई थिंक अ वेरी वेरी कूल सेफ्टी फीचर. सो इट्स जस्ट एन ऐप बेसिकली ऑन योर फोन एंड उस पर आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उस सोसाइटी का नाम जब इनपुट करेंगे एंड हाउस नंबर इनपुट करेंगे, यू गेट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप. एंड whenever somebody enters through the main gate of the society,
society, you just get informed immediately, and you in fact have to approve people. And I think this is an app which is now prevalent in all of Gurgaon, Delhi NCR, Noida also. So this is something you can definitely look at, and society में ये जरूर check करें कि वहाँ पे migrate है कि नहीं है. And needless to say, like I mentioned previously also, अगर आपको कम से कम hassle चाहिए तो आप PG के लिए भी opt कर सकते हैं. And there are some good PG options over here, जैसे कि Oyo Life, Zolo Stays, etc. And they have additional subscription for food services also. And उनकी prices are also nominal, but also they provide really good facilities like internet and comfort more than anything. So these are also some options that you can look at. And अगर आपको कोई normal PG listings भी देखनी है, and if you're okay with a few restrictions, although I would not personally recommend that you go to a place with restrictions at all, because you're an adult and a working person at the end of the day. But अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें कम से कम restrictions हो and खाना वाना भी अच्छा हो, देख लेना, तो आप एक normal PG के लिए भी opt कर सकते हैं. So that was all the ज्ञान that I had to give in today's video. अगर आपके पास भी कोई points है जो मैंने miss कर दिए, please mention it in the comment section below. I think one thing that still comes to mind is कि आप owner के साथ vibe check जरूर कर लें कि आपको कोई future में परेशानी ना हो, and everything should be on paper, on email, and your lease documents should also be perfectly made so that ऐसी कोई आगे जाके परेशानी ना हो आपको, especially at the time of leaving the place, or in terms of maintenance, or in terms of whitewashing वगैरह वगैरह. But अगर आपके पास भी कोई tips हैं ऐसे, तो इसे जरूर comment section में mention करें so that everybody else can also get access to that information. And I hope this was helpful to you. And if you're thinking of moving to Gurgaon, or if somebody else is, make sure that you share this video with them. Like this video, share, and subscribe to our channel. And I'll see you next time in an all new video. Bye bye guys.